Alright gamers, I'm back with another low effort video. But यार इस बारी I wanted to talk about Alan Wake 2. काफ़ी खेल लिया मैंने. I think around 10 hours maybe. It's incredible man. I think I mean easily you can point if you want to, and if you don't want to look at the other stuff, you can easily point out like a lot of flaws in it. But I think the way it starts, it's a very strong intro. शुरू से ही लाइक दे हैव अ वेरी गुड ओपनिंग जहाँ पे लाइक दे सेट द मूड, सेट द टोन, ग्रेट एटमोसफियर, नथिंग फील्स कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारा. इवन दो थिंग्स आर गोइंग स्लो, एवरी लाइक अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल स्टफ इज हैपनिंग. इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट बाय लुकिंग एट स्टफ, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्लेइंग इट. जो लाइक अच्छे वे में उन्होंने बैलेंस किया, लेकिन व्हाट दे ट्राइंग टू एम फॉर इट फील्स लाइक इट्स मोर देन जस्ट अ गेम. या लाइक वेरी सरियल सा टोन है. जैसे आई मीन आई वोंट स्पॉइल एनीथिंग इस वीडियो में. आई हैवंट फिनिश्ड इट आल्सो. बेसिक आइडिया ऐसा है कि देयर इज अ राइटर हु इज राइटिंग अ बुक एंड इट्स काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग, बीइंग मैनिफेस्टेड इनटू द रियल वर्ल्ड. टेक्निकली देखो तो इट्स नॉट लाइक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आइडियाज, एंड दैट आई थिंक इज वन ऑफ द थिंग्स जो इस गेम के बारे में काफी कूल है कि इट्स टेकिंग सिंपल आइडियाज एंड देन जस्ट मेकिंग पुटिंग देम इन अ वियर्ड सिनेरियो. एंड आई लाइक द आइडिया ऑफ अ राइटर राइटिंग थिंग्स एंड मैनिफेस्टिंग देम इन लाइक अ हॉरर फिक्शन बन के आ रहा है रियल वर्ल्ड में. दैट्स लाइक गूसबम्स लेवल का कॉन्सेप्ट. नहीं, गूसबम्स वाले बुक्स में आई हैव रेड अ स्टोरी लाइक दैट, बट डिफरेंस यहाँ पे कि इट्स लाइक टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड प्रेजेंटिंग इट टू यू इन अ वे की प्रेजेंटिंग इट टू यू विद अ लॉट ऑफ फ्लरिश एंड अ लॉट ऑफ स्टाइल. कि ना लाइक तुम्हें अगर जो हो रहा है वो मज़ेदार नहीं है तो जैसे वो प्रेजेंटेड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. द गुड थिंग इसकी जो हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. द प्लॉट इज ऑल्सो लाइक इट हैज़ मी होप. इवन दो सब कुछ नहीं समझ आ रहा है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड पुलिंग एट मोर ऑफ द थ्रेड्स. इसमें जो गेम प्ले सिस्टम इज लाइक अ थर्ड पर्सन रेसिडेंट इविल जैसा RE4 रीमेक इज लाइक अ गुड कंपैरिजन in terms of some of the inspiration for how the game plays. But उसके अलावा there is like a system where you're uncovering clues and you put the clues together in a board, and उसके लिए there is like a different place you go to called the mind place, like you're in your head, and it's like an instant switch. It's like great presentation of the technology even on a PS5. मैं PS5 पे खेल रहा हूँ, even though उसका जो main technical showcase है it's on PC, but I'll come to that later. But on the PS5 even the stuff with like switching back and forth from like you playing to going to the mind place and then going back, like it's like instant. Like तुम बटन दबाओ and you get there, and there's like a whole board where you can put clues together, and वो put together करने में काफ़ी मज़ा आता है. It's not very complicated कि like ना you'll have to learn like a whole new gameplay system to understand कि ना वो clues कैसे put together करने हैं, but it's also not so hand-holdy. like ऐसा लगता है you have some agency. It's not फालतू में too complicated, because that is not the end. Like there is the rest of the game and the plot is complicated enough like to understand and follow, and that clue board actually does a pretty good job of like putting the thread together as to क्या हो रहा है, what you're going after and क्या हुआ है already. But also उसके बाद भी like I think the difference is कि ना like the way it's presented ऐसा है कि काफ़ी सारे weird ideas होंगे and weird चीज़ों का weird explanation भी होगा. कि ना वो गेम ऐसा बोलेगा नहीं ऐसा ही है, like they'll be very serious about it. They'll present it इतने flashy से way में कि मतलब even if the explanation doesn't make a lot of sense, the game is taking it so seriously कि it's fun to follow along. तो उसी की अच्छा ही क्या, what's the point, like what are they trying to say उससे में ना like that I think is like very surreal, very cool. Of course the obvious inspirations like True Detective and Twin Peaks and all, वो तो है. म्यूजिक में तो काफ़ी True Detective वाला म्यूजिक इंस्पिरेशन वाला वाइब है, which is so cool. Also another thing that I will say is कि जैसे स्टार्ट होता है like start the first character that you see, that you interact as, is like directly continuation from like one of the important characters in the first game. तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर हो सके तो तुम एलन वेक 1 खेल लो, एंड उसका जो DLC वगैरह था ना, ऑल ऑफ इट इज काइंड ऑफ वर्थ इट. एंड एडिशनल तुमने अगर कंट्रोल वगैरह खेला है, रेमेडी कह रहा हूँ, क्या गेम था बीच में, क्वांटम ब्रेक एंड ऑल, अगर वो सब खेला है तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट एड्स टू द एक्सपीरियंस. बट ऐसा नहीं है कि इफ यू प्ले एलन वेक 2 डायरेक्टली तो तुम्हें यू विल बी एबल टू एंजॉय एलन वेक 2 एज इट इज स्टैंड अलोन भी, बट इट एड्स अ लॉट टू द एक्सपीरियंस इफ यू have played the other games, and I think it's totally worth it. मतलब ऐसा गेम कितने बार ही आएगा नहीं, like you'll get it like once in 10 years, like इस टाइप का. like you'll get other great games like Red Dead है, Disco Elysium है, like you'll get all those games, but all of them are different in their own ways, and this game is very unique. You know, ऐसा कुछ like बहुत rare है, especially like with like almost AAA productions. They've taken a lot of risks, even though like overall जो gameplay का loop है उसमें maybe it will feel familiar, but it's still made interesting enough with some of the special mechanics they have, the flashlight वाला stuff and all. It's kind of cool, and they don't throw a lot of enemies at you. They don't make it so कि वो gameplay तुम्हें like repetitive and tiresome हो जाएगा. It's not too complicated या बहुत deep नहीं है, but फिर बहुत ज़्यादा overused भी नहीं है कि ना boring हो जाएगा. They have other stuff. They have like a lot of exploration. In fact, बीच में तो like when you eventually play as Alan Wake,
क्योंकि स्टार्टिंग में लाइक आई सेड यू प्ले एज एक कैरेक्टर, देन यू मूव ऑन टू प्लेइंग एज सागा हु इज द डिटेक्टिव, लाइक FBI डिटेक्टिव हु इज इन्वेस्टिगेटिंग दीस मर्डर्स, एक कल्ट इन्वॉल्वड है ऐसा कुछ. एंड देन लेटर ऑन यू प्ले एज एलन वेक. इन एलन वेक बन के खेलते टाइम देयर आर सम सेक्शंस व्हिच फील प्रीटी मच लाइक अ वॉकिंग सिमुलेटर वाला. इट्स जस्ट द प्रेजेंटेशन इज सो अबव एंड बियॉन्ड, and like such weird stuff is happening, and like visually even on screen like layers upon layers of video footage is running and the game is also running. वो presentation and all is very cool, and the way they're writing and the voice acting is so good man. Like even saga के part से starting से it really feels like the conversations feel very natural कि ना हाँ like ऐसी बातें कर रहे हैं जो like there is useless talk also happening जो normally लोग करेंगे. Like if you're a normal person you won't always be talking about the objective in the game, the main villain, है ना, जो इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स है हमेशा उसके बारे में बात नहीं हो रही, रैंडम बातें भी हो रही होगी, विच आई थिंक फील्स नेचुरल एंड काइंड ऑफ हैज लाइक अ गुड कन्वर्सेशनल फ्लो. एंड ऑल्सो वो उसके थ्रू लाइक अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग हैपनिंग, जैसे यू मीट दीज रैंडम कैरेक्टर्स स्टार्टिंग में हु लाइक रिपेयरिंग अ स्ट्रक्चर और समथिंग, एंड उनके साथ यू हैव लाइक ईजी लाइक 3-4 minute long conversation just talking random stuff, but it's adding flavor to the game. थोड़ा बैक स्टोरी ऐड कर रहा है. Like I said, nothing feels wasted. सब थोड़ा purposeful and with direction, meaning and intent किया है. It's very cool to see. Like इतना deliberate वो गेम ना, ऐसा लग रहा है nothing is just a mechanic for the sake of it. सब कुछ मतलब कुछ सोच के बनाया कि ना हम ये कर रहे हैं. Even the music, especially the way it kicks in, like काफी feel and vibe काफी ऐड करता है. It really does make you feel something, which you know like a lot of good games even fail at doing. Even where I say कि the gameplay may not be the most complicated, बट जैसे जो वर्ल्ड है ना, इट्स नॉट ओपन वर्ल्ड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, बट इट फील्स सेमी ओपन इन द वे की गेम तुम्हें लाइक एक डायरेक्टेड पाथ या ना लाइक इट्स अ वेरी रफ मैप दैट यू नीड टू काइंड ऑफ पाथ लाइक खुद से थोड़ा घूम फिर के ढूंढ के निकालना है. एंड अ लॉट ऑफ वे पॉइंटिंग नहीं है, हैंड होल्डिंग नहीं है, जो समटाइम्स कैन फील लाइक ना थोड़ा बैक ट्रैकिंग ज़्यादा हो रहा है या थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. बट ऑल्सो इट एड्स टू द फैक्ट यू आर लाइक एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एंड बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड इट्स नॉट ओपन वर्ल्ड, तो ऐसा नहीं कि ना लाइक यू जस्ट तुम बहुत ज़्यादा घूम जा रहे हो. काफ़ी बारी इवन इफ यू गेट लॉस्ट अ लिटिल बिट यू विल प्रोबेबली फाइंड समथिंग लाइक एन अपग्रेड और अ नोड, समथिंग जो काइंड ऑफ एड्स यू नो सम रिसोर्सेज व्हिच कैन हेल्प in the combat and all. मतलब वो सारा like very deliberately done. And काफ़ी बारी जो compelling part है वो ये है कि like weird stuff is happening and you're following along to see what will happen, and then there are gameplay systems in between. है ना, उस टाइप का एक स्टोरी टेलिंग एक पुल भी है which shows a lot of confidence ऐसे एक स्टूडियो में. And I'm glad कि Remedy was able to pull this off, and it will give them a lot of confidence in whatever they then आगे try to do with Max Payne and all. And even the way the cutscenes and all are presented, like ऐसे काफ़ी बारी होता है in other games ना, like I'll have something else running on the second monitor, कुछ podcast या कोई movie TV show or something, some comfort food that I'm watching. गेम खेल रहा हूँ, cutscenes वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, the story is usually not that interesting and it doesn't matter. And like, but इस game में like I'm hooked because so much layers upon layers of like things are happening, things are being said, the story is being explored in a way कि तुम्हारा attention काफ़ी रहता है उसमें. I thought that was like fascinating. Like वही तो चाहिए, like ना actually can hook you. And even इससे just पहले I was playing Spider-Man Miles Morales, and उससे I think I'll come to a few comparisons. But like I'm playing on the PS5 and after playing Spider-Man 2, which is like crisp एकदम देखने में, like technically I think it's like very sharp looking game. Alan Wake में काफ़ी points पे you can notice कि like वो technically वो इतना consistent नहीं है. Of course the game looks incredible because of the visuals, the art style and all. उसमें तो like uncomparable है. लेकिन sometimes you'll see the reflections are not like really sharp. काफ़ी grainy reflections. Sometimes the aliasing is terrible man. But उसके अलावा I would say the way the volumetric fog, the atmosphere and all, the lighting and all is done, it adds so much more. जो मतलब even after saying like all this, और भी कुछ bugs थे, जैसे एक होगा जैसे I would do like a thing and उसके next जगह जाना है and मेरे साथ मेरा like I have a companion who should accompany me, but वो मूव ही नहीं करेगा. And it's really annoying क्योंकि you go like you do a lot of things and वो you don't know कि तुम्हें पता नहीं है कि मूव करना चाहिए था and वो नहीं कर रहा है, इसलिए you're not able to make progress. You think कि maybe you're doing the wrong thing. एंड फिर रिस्टार्ट करके फिर देखा ड्यूड ये तो चल के आ गया मेरे साथ एंड ये इसी को फॉलो करना था मुझे. तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि वैसे कुछ बग्स है. द एलियासिंग इज लाइक द बिगेस्ट थिंग. आई रियली विश कि दे कुड हैव फिक्स दैट. बाकी तो रिफ्लेक्शन चलो थोड़ा मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट द एलियासिंग काफी स्टैंड आउट करता है, लाइक एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो. बट इन कंपेरिजन लाइक आई सेड, एलन वेक लाइक हैड माई अटेंशन थ्रू एंड थ्रू. स्पाइडरमैन as much fun as it was, it didn't like make me feel much. Yeah, like I don't have like much to say about it. Fun game, definitely highly recommend, but something like Alan Wake jo is trying something more, like taking a few risks and maybe failing, but उन risks में like a lot of it is paying off and a lot of it is very well thought out. And also I think यार खत्म करने से पहले I wanted to mention the reviews. Overall तो वैसे Alan Wake को अच्छे reviews मिले, 10 out of 10, 9 out of 10 and all.
But जैसे you see a few random reviews like Eurogamer giving it a 6 out of 10 or 3 out of 5, picking out कि ना like कि hey they're trying a lot but काफी flaws है. But यार my point is कि like don't you want to reward like them trying so many things? मतलब कितने games ही try कर रहे हैं. Like Miratsu, Assassin's Creed Miratsu easily got a 8 out of 10 from IGN. Like weird कुछ भी नहीं try किया उन्होंने. All they did was lesser, safer, less risks, less ambitious, less meaningful, and that gets a 8 out of 10 easily. And यहाँ पे like when it comes to an Alan Wake 2 is where all the questions have to be asked. I know different reviewers, different people, but open critic पे weightage तो weightage होता है. वहाँ पे तो ये सारा context count नहीं होता. So that's why like I'm saying like what is like the message also being sent out? कि ना like a Call of Duty can get a 8 आराम से like by doing the same thing. Hey, I enjoy Call of Duty तो it's not कि मैं 8 मुझे 8 से प्रॉब्लम है. But my point is कि it's kind of meaningless with a lot of these review scores these days. And not just reviews, like people also like bringing up like bizarre comparisons and ideas to these games. You know, like it's like a woke female detective game. Like यार ये मतलब of all the things that Alan Wake 2 has, is this like your condensation of what that game is? Of all the things that the developers did in the game with the music, the art, the vision, the storytelling, the writing, the gameplay, and like the overall package that they're trying to present. एक तरफ like the developers are trying to make a point with that, and on the other hand you see a random opinion like this also. It's kind of weird कि how people are approaching some of these games. Like दोनों sides से like with how the scores are all coming through and how these reviews are making the point. It kind of feels like कि like वो game किस intent and purpose से बना है वो देखा है. The game is not being looked at as an art form, a creative form. It's being looked at like a product. कि ना as a product ये कैसा है, मतलब ये चलता है अच्छा, easily चलता है. Is it easy to find fun in it? अच्छा okay, Assassin's Creed Mirage 8 out of 10. अच्छा complicated है, इसमें कुछ चीज़ें missing. अच्छा fast travel, too much fast travel, a little bit of loading. Oh fuck man, shit. Starfield 7 out of 10. Like it doesn't make any sense. But anyways, भाई लोग यार, I hope you guys are also playing Alan Wake 2. I would love to hear what you guys think. I तो love it, and this is the kind of game that I would love to give a 10 out of 10. Like इसमें जो मुझे दिख रहा है, I want to tell the developers कि hey, by 10 out of 10 and pointing out the flaws, I want to say कि this is क्या बोलते, I want to see more of this, and जो problems है वो है and try to fix those, but yeah, definitely more of this. This is something that a lot of studios can't do, and मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि more of this from everybody. ना like more of this जो इसको अच्छे से कर सकता है, ऐसे execute करके ला सकता है. Remedy can do it more of the, yeah, it's great to see a studio specializing in something like this and having a vision to like build upon something like this over multiple games, even when they failed. Quantum Break ऐसा नहीं कि Remedy के कुछ भी मतलब वो बना रहे सब बढ़िया है, सब फाड़ू है, but learning from those mistakes and then building upon that with Control and then now Alan Wake 2, it's really interesting to see, and I would love to hear what you guys, जो तुम लोग खेल रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है, and I'm sure some of you must be hating it. I would also love to hear the person who thinks this is the woke female detective game. वो भी सुनने में मजा आता है. मैं सुनना चाहता हूँ वो argument also. But anyways, with that यार, like कर दो, always helps. अगर तुम पहली बारी हो, check out some of the other videos. अगर पसंद आए तो subscribe कर लो. But yeah, with that, I'll see you guys whenever I see you next. And to me as a creative, and maybe the business side doesn't quite agree with this always, but I feel that it's better to evoke a strong emotion one way or the other. There will be a portion of the audience who will love it because they have never experienced anything like that. There will be another portion of audience who will absolutely hate it, but that's kind of fine. Yeah. Because there is plenty of gamers out there. Gotta imagine you'd rather have a game that, as you said, evokes a strong emotion or is polarizing or, in particular, has a point of view, right? Yeah. And creatively, you have a point of view. Frankly, I think is awesome.